Hello guys and welcome to another video. Now the topic of this video is basically the LCAT, which is also known as LUMS Common Admission Test. And I'm making this video because I got a few requests कि LCAT पे मुझे एक video बनानी चाहिए. So without wasting any further time, let's get into it. Alright, so first things first, what is the LCAT? Well, जिस तरह हर एक इंस्टीट्यूशन का एक एंट्री टेस्ट होता है, बिल्कुल उसी तरीके से लम्स का एक जनरल उसके यू कैन से लम्स में किसी भी स्कूल में एंटर होने के लिए एक टेस्ट जो आपको देना है उसका नाम है LCAT. एंड LCAT इज नॉट मैंडेटोरी टू गिव and I'll come to that in a minute. But talking about this test itself, now LUMS does not disclose a lot of information about its entry test. So B.Ed के अगर आप साइंस स्कूल में जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर एक SBA SSC का एक अपना एंट्री टेस्ट होता है और उसकी भी पैटर्न चेंज होता रहता है. मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज they do keep changing the pattern of their entry test. That is the case with AKU as well. हर कुछ अरसे बाद पैटर्न चेंज हो जाता है ताकि स्टूडेंट्स जो हैं दे आर फेस्ड विद लाइक यू कैन से रिलेटिवली अ न्यू सेटिंग फॉर अ पेपर और वो मोनोटनस ना हो जाए. खैर सो जो LCAT है, LUMS in its own is very secretive about its admission process as well as its entry test. So you won't find a lot of information on the LCAT जो directly officially LUMS की तरफ से आपको मिलेगी. Though you can find information on like different websites, I did view them myself, but I wouldn't say, you can go ahead and give them a read. आप Google पे आपने search करना है LCAT and you will find like multiple websites. You can search them up. But I personally wouldn't say that these are the first-hand resources that you should be using. Get an idea from there, but as I said, LUMS is very secretive about its entry test. तो आपको इतनी ज़्यादा official information on the LCAT नहीं मिलेगी. Now, although that might make you hesitant कि you might, you have to give this exam which you know literally nothing about, well, that's not the case because you can say कि बिल्कुल mirror examination जो बिल्कुल LCAT जैसी होती है, that is basically the SAT 1. So this brings me to my point number 2, who has to give the LCAT? Well, LCAT जो है वो basically LUMS 2013 से पहले तक लेता रहा था. It was basically there. After 2013 it got discontinued, and just recently because of the COVID times many people were not able to give their SAT 1s और उसके behalf पे basically फिर LUMS ने LCAT का return किया and basically they started taking the LCAT again. So LCAT is, you can say, a substitution for the SAT 1. So many people, including students in FSC, many times they don't know कि SAT 1 क्या होता है, and that's why because not many people are aware of it. So जो लोग SAT 1 नहीं दे पाते उनके लिए एक alternate रखा गया है LCAT. अच्छा, now as I said कि LCAT is the mirror image of the SAT 1. And that should make you happy. Why? Because usually जो जितने भी हमारे institutions के entry test होते हैं उनके लिए ज़्यादा resources नहीं मौजूद होती to practice. That makes it kind of difficult to find material and the theory that needs to be covered. So because this LCAT is very similar to the SAT 1, SAT 1 is a very famous examination conducted worldwide, and it is generally needed for undergraduate admissions in the US. तो बिकॉज ये काफ़ी रिनाउंड सा टेस्ट है तो इसकी वजह से आपको बहुत सारी बुक्स और बहुत सारी रिसोर्सेज मिल जाएंगी. सो दिस ब्रिंग्स मी टू माई पॉइंट नंबर 3, एंड विच इज़ हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर द LCAT. देखिए LCAT में आपको दो चीज़ें आएंगी मेनली. एक आएगा मैथ का सेक्शन, दिस विल बी अ जनरल मैथ सेक्शन, एंड द अदर विल बी अ जनरल इंग्लिश सेक्शन. सो इस टेस्ट का जो पर्पज़ है वो आपका एप्टीट्यूड देखना है कि बेसिकली क्या आप जनरल मैथमेटिक्स और जनरल इंग्लिश में perform कर सकते हैं या नहीं, because these are the two skills that I think in today's time, regardless of what profession you aim on getting into, you should have at least these two skills. तो ये आपका टेस्ट करने का इसका मकसद है. इसकी क्या पासिंग परसेंटेज है, क्या है, ये हमें बिल्कुल नहीं पता. As I said, we don't know a lot about the LCAT because, as I said, LUMS is very secretive about its entry test and its admission admission criteria. You just submit your profile, you submit your application, online application,
and it is just considered. So आप कोशिश करें, आप हर चीज़ में बेहतर करें, so there is no way for the admission office to reject you. And let me tell you कि LUMS के students को खुद काफ़ी ज़्यादा जो है वो LCAT के बारे में नहीं पता. Now myself included, I have not given the LCAT personally, so I am not very well aware of how it is conducted. So I can only guide you on the behalf of SAT 1. So एज ए सेड, एक मैथ का सेक्शन है और एक इंग्लिश का सेक्शन है. मैथ के सेक्शन के अंदर आपको जनरल मैथ आएगी, यानी कि मैट्रिक या ओ लेवल के लेवल की आपको मैथ आएगी. कुछ एडवांस टॉपिक्स हो सकते हैं. आई विल गिव यू द बुक्स वेयर यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम, सो डोंट वरी. द सेकंड थिंग इज इंग्लिश. इंग्लिश में दो सेक्शंस आपको यूजुअली आएंगे, या एटलीस्ट दो चीज़ आपकी टेस्ट होंगी. एक होगा आपकी ग्रामर, यानी कि राइटिंग स्किल्स. राइटिंग स्किल्स से मेरी मुराद है कि आपके ग्रामेटिकल रूल्स कितने स्ट्रांग हैं, वो चीज़ बेसिकली टेस्ट होगी. एंड द सेकंड थिंग विल बी कॉम्प्रीहेंशन, कि अगर आपको एक पैसेज दिया जाए तो आप उसको कितने अच्छे तरीके से कॉम्प्रीहेंड करके उसके सवालों का जवाब दे सकते हैं. Again, this pattern is very similar to the SAT one. So now I will dive into the fourth point, which is the resources that you should use for the LCAT. Okay, so math के लिए or even English के लिए, if you're looking for just a single online resource that you can utilize and get done with everything, अगर आप खुद research करने में interested नहीं है, किताबें use करने में interested नहीं है, बस चाहते हैं कि एक solid जगह पे आपको हर चीज़ मिल जाए, तो उसके लिए I would recommend Khan Academy. So go over here and make or sign up basically with your email. It is absolutely free. यहाँ पर SAT 1 को select करें और अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर बेसिकली आपको टॉपिक बाय टॉपिक इंग्लिश भी सिखाई जाएगी और टॉपिक बाय टॉपिक मैथ भी सिखाई जाएगी. एंड इसके अलावा आपके हर टॉपिक के बाद आपका उसका क्विज भी कंडक्ट होगा ऑनलाइन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन सम पास्ट पेपर रिसोर्सेज, आई थिंक पास्ट एग्जाम्स या 7 डेमो एग्जाम्स जो हैं वो भी खान अकेडमी पे आपको मिल जाएंगे, जो कि SAT 1 से लिए गए, बेसिकली SAT 1 के ही पेपर्स हैं. So do attempt those, as many of those that you can. The system will also grade those papers for you, so you would know exactly how well you're performing. So Khan Academy is my, basically I would say this should be your go-to resource if you're looking for something जो बिल्कुल comprehensive हो और वहाँ पर हर चीज़ मौजूद हो और organized तरीके से मौजूद हो. So Khan Academy it is. However, if you want to go the extra mile and do something extra, मैथ के लिए जो नंबर 1 बुक में सजेस्ट करूँगी, दैट इज़ कॉलेज पैंडाज मैथ वर्कबुक. द रीज़न वाई आई लव दिस बुक सो मच इज़ बिकॉज इसमें हर एक टॉपिक आपको मिल जाएगा और हर एक टॉपिक के साथ, यानी वो आपको ब्रीफली उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद दे विल गिव यू SAT 1 लाइक क्वेश्चंस दैट यू कैन अटेम्प्ट एंड यू विल गेट द आंसर की एज वेल. इसका फ़ायदा ये है कि बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से बुक जो है वो बनी हुई है. And personally, I found the explanations very easy to understand. And even if you don't, अगर आप एक particular topic करें, you can always YouTube it because there are a lot of videos online for SAT 1. So resources की बिल्कुल कमी आपको feel नहीं होगी. So for math, this is the book that I would suggest you to go over. Now for English, there are a lot of books that you can actually use. And the book that I will actually recommend you for grammar is mentioned, or it is popping up right over here at my left. So ये जो book है ना, this is College Panda's basically writing and grammar book, and I really appreciate it because once again I really like the way that it has been organized. I personally found it very helpful and easy to understand. तो ये writing और grammar basically इसके लिए I would suggest this book. Apart from that, there is another very famous book which is again popping up in your screen. काफ़ी लोग ये भी यूज़ करते हैं, and the reason why they use this book, although I found it a bit more difficult to comprehend, is because इसी book का, इसी author का basically एक और book मौजूद है which is solely about comprehension, and it is now popping up on your screen. So अगर आप comprehension के लिए किताब यूज़ करना चाहते हैं, this is the book that I would recommend. अगर आप writing के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो I would recommend College Panda's Writing and Grammar Workbook. और अगर आप उसको छोड़ के भी मतलब सेम ऑथर की बुक्स यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास वो भी मौजूद है. लास्टली इंग्लिश के लिए there's another book. Actually it's a complete guide book for the SAT 1, but I only used it for the basically English section, so I can't comment on the mathematical section of it, and that is the SAT 1 black book. I personally use this and I also found this very helpful. So अगर आप easy way देखना चाह रहे हैं, अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप खान अकेडमी करें, और उसके बाद अगर आपने कोई बुक यूज़ करनी है तो I would recommend College Panda's book in both for both math and English, but English के comprehension section के लिए I would recommend कि आप ये book attempt करें.
And that's it. If you basically prepare for the SAT 1, you will, in other words, prepare for the LCAT. So I would just say कि SAT 1 की prep करें और आपका LCAT automatically आपसे हो जाएगा. If there are any questions that you still have in mind, you can comment down below and I will try to answer them to the best of my capabilities. And well, till the next video, until the next time, Khuda Hafiz, take care.